Hi, sir. So you have completed over 4 decades of illustrious journey in the medical profession. So what circumstances or who inspired you to take up this demanding profession? Medical science is definitely a demanding profession, and it is a long period, 4 decades. If I look back, that is very interesting. Normally after MBBS, I came from a very, very remote rural area of Bihar. And after that, when came to MBBS RG Kolkata, so it was an absolutely different world. So whole suffering of rural Bihar, rural Bengal, that was in my memory. All my friends, relatives, it suffered. So it was a passion that some basic medical facilities should be organized for everybody. And क्या होता है सबके लिए कि anything means heart should be all right. So heart is a dangerous disease. Young people die of heart failure, heart attack. So heart comes in the priority, but during those days, I'm talking of this is early 80s. So that time facilities were very, very limited. बहुत कम सुविधाएं मिलता था. So incidentally, after completing my surgical training, after MBBS, I entered the MS program, Master of Surgery. That was a broad base, working in different disciplines. Then heart was in my heart. I wanted to work on heart, but just struggling for opportunity, suddenly opportunity came. Your Kalyani has got a hospital, Gandhi Hospital, Gandhi Memorial. Yes. That is a heart hospital. One very senior surgeon, he is my first guru in heart, Professor Sadhan Chandra Rai. He was very, very passionate, very, very hard working. He used to work around the clock. So I was appointed to that hospital because they had been in search of a young guy who can work like donkey. I was labeled as a donkey who will work and having some surgical training, and I was amazed at this selection. So I entered there and I was there for maybe 1.5 years. That was an eye-opening. It's a small place. Cardiac surgery is a challenging job. Very Dr. Sadhan Rai and another guy. Not too many doctors, not too much facilities. In a struggling situation, surgery was on. That time simpler surgery like hole in the heart, ASD, BSD, वो बच्चे वो लोग कहते हैं. Then some valve replacement, artificial valve replacement. So these are the main surgeries. Additionally, some thoracic surgery cases like lung cancer, some tubercular disease. ये सारा उस समय के लिए ये काफी लंबा लिस्ट था. Compared to early 80s, these are very, very high-end works. And my boss, Dr. Sadhan Rai, he was a senior person. I was his junior. और राम लक्ष्मण का राम लक्ष्मण तो पता है राम का क्या बोलो एक छोटा हनुमान. I was a Hanuman in his team. So only thing we used to work very hard round the clock. And the relation that time was very congenial. We had some nursing staff. Still I remember one lady, Manju. She was Manju. She was so passionate and loving. She was quite senior to us. उसमें क्या होता था? We used to start operating in the morning 8 o'clock. So surgery usually took 10-12 hours. शाम को 8 बज गया. और other people, one assistant doctor was there. And myself being most junior by age and entry in the team. So सब लोग धीरे-धीरे काम खत्म होने लगा, बाद में निकल जाते थे. So I had to do the all closer work, finishing work. वो सिस्टर क्या करती थी, आके पीछे से मास्क खोला, आके मुंह में खाना डाल दिया. So this was a great relation. This is great She memory. was very caring. Very, very caring to everybody. And age-wise, she was quite senior. And she was so passionate. It was a government job. So she could leave after 6-8 hours. But she used to come in the morning, stayed with us for the whole day, whole night. So that was the beginning. That time there had been a lot of thoracic surgery cases. Kalyani, there is a sanatorium, TB hospital. They had lot of TB patients pass in the chest, then lung ka damage ho gaya, खून निकलता है. So all these TB patients who need surgery, that was there. Then cardiac cases, as I told you, ASD, BSD, valve replacement, ये सब केस आता था. Pacemaker implantation, now it is very simple. That time it was a major procedure. So all these things are there, and it was not like hospital. It was just like enjoying place. Okay. We used to work together, and आगे पीछे कुछ नहीं, काम करो, जिंदगी बिताओ.
So this was maybe 1.5 years. Then I was transferred to NRS Medical College. It's a huge medical college in Kolkata. And that was a golden period of time. That I spent there probably from 82 to 94, that 12-13 years. And that was a residential position. By the time I had completed my MS, then M.Ch, basic training. In between, I went to work for some time in Bombay Jashlok Hospital with Bhabatosh, sometimes in Delhi, AIMS. But it was a fascinating place. It's a big department medical college, but very thin cardiothoracic. There was no man. It was very tiring work. And I had a quarter there, residential quarter. So those 12 years were really brilliant. Huge work. Every day, morning to evening, lot of surgery, lot of emergency, lot of learning every day. So that working situation, looking patient from very close distance. Let me tell you, the children getting hole in the heart, very poor people coming from Sundarban remote area. In her mother's lap, she came to Kalyani Gandhi Hospital. What to do? Sadhan nahi aapke paas, material, medicine, there's a difficulty, but still we used to manage with that. And this तरह से a great bonding developed between surgeons and patients. The major thing what I feel in cardiac surgery, cardiothoracic major procedures, that it is a passion, it is love. जब प्यार हो जाएगा subject से, only then you can work. Otherwise, now these disciplines are well established. This discipline you can people recognize this. There are a lot of scopes. But that time it was all negative thought. अरे यार उधर क्यों जा रहे हो? तो कुछ खाना नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा. So contemporary people, our other colleagues, they worked some in general surgery, some in gynecology, some in ENT. So after a couple of years, they became rich people. गाड़ी लेकर लोग आते थे. So by the time, it was a struggle for us. So initially, after entry into Gandhi Memorial Hospital, Kalyani, then coming to NRS Medical College, this 12 plus 2, these 14 years were grooming period. Large number of patients, huge people contact, and learning from my guru, I told you, Sadhan Roy, he is a brilliant person. Still he is alive, he is 81. Still he is active. So brilliant person. His major quality was motivating. That एक बंगले में कहावत है कि गाधा थे घोड़ा बनाना, तो गधे के अब घोड़ा बनाओगे. Discipline, tune, how to work and relentless continuous working. हम तो अपने बच्चे को बोलते हैं जो ट्रेनिंग में है, तो कार्डियक सर्जन बनना है तो आपको आदमी से पहले गधा बनना पड़ेगा. गधा मीन्स who will not ask questions. गुरु जो बोलेगा चलो अपना बोझा लेके जाओ, आप कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं रहना है. You listen to what you are saying. So you should be very hard working. Then you tune yourself to be fast. So cardiac surgery training करना, पहले आदमी से गधा बना, फिर से घोड़ा बना. So this is the basic training. So exposure to suffering people in rural areas in very early life. Then Arjigar Medical College, Government Medical College, hugely crowded hospital. Large number of people are coming every day, all poor people. The next phase in Gandhi, that was also government hospital. So entire motivation to work in cardiac surgery or in major department came from those people, those poor people. It was always with you. The need of their need of the people. And if you come across this subsequent society, phenomenal experience. So later on, wherever I spend my life, long time in big places, major places, but those scenario is really, really memorable. And इसमें क्या होता है कि if you treat some child of a very poor lady, if he is alive and goes home, then it's an interesting experience. And even after several years, if you come across it, they will recognize you. Yes. And if you like, I will tell you what the story is later also. And we have one of the questions. We have that. Yes, let us see. So, sir, our next question is, what are the major challenges in preventing cardiovascular disease in our country? This is very, very important question. For cardiovascular disease, you have to look at the burden of disease. That will give you an idea how to prevent. Normally, cardiovascular disease comes to a couple of categories. One is congenital heart disease.
बच्चे जो बीमारी लेके पैदा होते हैं, जो जेनेटिक या कोई भी डिफेक्ट्स होता है, ऑर्डिनरी होल इन द हार्ट, सिंपल होल बिटवीन एट्रियल सेप्टम, दैट इज ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा था वेंट्रुलर सेप्टल डिफेक्ट, तीसरा PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और एक आता है ब्लू बेबी, बच्चे ब्लू हो जाते हैं, टेट्रोलॉजी फेलो होते हैं, TOF. सो दिस इज द कॉमन कार्डियक डिजीजेज. ये सारा कंजेनिटल है. दूसरा रीमेटिक आता है कि गांठ में दर्द हुआ, गले में दर्द हुआ, फिर धड़कन होने लगा, ग्रेजुअली valve became damaged. So that is valvular heart disease. दूसरा दो valve जो लेफ्ट साइड का आता है, mitral valve, that is between atrium and ventricle, left sided, that's the mitral valve. Another valve, aortic valve, between ventricle and the aorta. ये दोनों valve बर्बाद होने से you have to operate. So this is second set. Third set, that is due to cholesterol deposition, atherosclerotic coronary disease that ends in heart attack, myocardial infarction. So ये जो सारा डिजीज है, इसको प्रिवेंशन के बारे में पूछा ना. प्रिवेंशन मतलब पीपल हैव टू बी अवेयर. इसके लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, हेल्थ एजुकेशन. लोग को समझना चाहिए कि ये हार्ट में छेद क्यों होता है. एक आई हैड वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. आई यूज्ड टू गो टू हेल्थ कैंप्स. आपका लखनऊ में बहुत सारा हेल्थ कैंप किया इनके साथ, रामकृष्ण मिशन पॉलीक्लिनिक के साथ. सो गांव में व्हेन यू डिक्लेयर सम कैंप, large number of people come there, maybe 200, 300, 400, and लोग को हार्ट समझ नहीं आता है, कुछ भी है चलो पहुँच जाओ. तो वो जो कैंप में लोग आते हैं, तो कैंप में पता चलता है कि पीपल आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. तो कैंप में हम एक बात करते थे, दैट वाज इंटरेस्टिंग. ये शादी के पहले लोग तो गुरु जी के पास पहुँचते हैं, देखो इसका जन्मपत्री जन्म कुंडली मिला के देखो चलेगा कि नहीं. हम बोलते थे बेटा ये करो, आई एम नॉट फाइटिंग विथ यू, लेकिन इससे पहले आपको हेल्थ काउंसिल करना है, हेल्थ स्क्रीनिंग करो. वो गुरु के पास जाओ, ओझा के पास जाओ, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल. आपको वो तो बोल नहीं पाओगे, बोलो लोग बिगड़ जाएंगे. लेकिन बिफोर मैरिज यू मस्ट चेक मेडिकल फिटनेस ऑफ बोथ ऑफ देम एंड यू शुड डू काउंसलिंग. रीजन बीइंग, जैसे थैलासीमिया डिजीज है, दोनों को थैलासीमिया रहेगा, दे आर नॉट एक्सप्रेस डिजीज बट दे आर कैरियर. Then the next generation will be like that only. So by with this you can avoid genetic disorders. So congenital heart disease में बड़ा चीज़ है कि whether it runs in families. जिस फैमिली में होल इन द हार्ट होगा या सम अदर डिफेक्ट होगा, एक्स्ट्रा ईयर, एक्स्ट्रा फिंगर, जैसे क्लिप कटा हुआ, तो एनी डिजीज कंजेनिटली ट्रांसमिटेड इज कॉमन इन चिल्ड्रन. बड़े लोग को होगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन होगा. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर शुड हैव गुड न्यूट्रिशन. बिकॉज एक्स्ट्रा चाहिए ना, बच्चे के लिए चाहिए, उनके लिए चाहिए. सो गुड न्यूट्रिशन, दैट शुड रेस्ट, दैट इज मेंटल पीस. प्रेग्नेंट लेडीज से लड़ाई झगड़ा करो, मार दंगा करो तो बच्चे अच्छे नहीं होंगे, उनका तकलीफ होता रहेगा. एनीमिया इन प्रेगनेंसी, देयर इज ऑल्सो डिफिकल्ट इश्यूज. सो प्रॉपर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कैन नॉट टेक मेडिसिन. लॉट ऑफ मेडिसिन्स आर डेंजरस एंड दे आर म्यूटाजेनिक, दे कॉल डिसऑर्डर्स. बट इसमें भी एजुकेशन की जरूरत है. इट हैपन्स ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज डेंजरस टाइम. इसके बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. सो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी मदर्स शुड बी केयरफुल ऑफ टेकिंग मेडिसिन. अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्ट चाहिए, और मेडिसिन अवॉइड करना है फास्ट न्यूट्रिशन में. सो दिस आर द इश्यूज जिसमें इफ़ यू आर केयरफुल, तो ये केयरफुल के लिए हेल्थ एजुकेशन चाहिए, बेसिक एजुकेशन चाहिए, आपको समझाना पड़ेगा. सो बाय दैट यू कैन अवॉइड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी तो USG होता है टू फाइंड आउट fetal echo भी होता है. Yes sir, today even in your talk also you were discussing. So during pregnancy, baby is checked thoroughly by ultrasonography. If you find some defect, you can have fetal echo. Even fetal surgery भी होता है ना. अभी कोई डिफेक्ट है, बेबी इन मदर्स वूम, वही ऑपरेशन हो गया, पैदा होने के पहले अच्छा हो गया, ये भी होता है आज के दिन में. सो फाइंडिंग आउट डिजीजेज अर्ली and this education, this understanding, this will help you to prevent congenital heart disease. Valvular heart disease के लिए
बच्चे मान लो 10 साल 15 साल 20 साल, उस समय रिपीटेडली जोड़ में दर्द होता है, घुटने में, गले में दर्द होता है, खांसी होता है, थोड़ा बहुत लोग दवा खा लेते हैं फिर इग्नोर करते हैं। दिस इज अर्ली साइंस ऑफ रियूमेटिक फीवर। रियूमेटिक में खूबी यह है कि ये होगा, फिर दवा लो चाहे नहीं लो, इट विल सेटल ऑटोमेटिकली आफ्टर कपल ऑफ डेज, इट विल रिकवर अगेन। रिपीटेड अटैक्स और रियूमेटिक फीवर कॉज डैमेज ऑफ हार्ट वाल्व, और ये अफेक्ट करता है यंग पीपल बिटवीन 15, 25, 30, सो दैट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ द हार्ट वाल्व। इफ समबडी इज केयरफुल ऑफ दीज इशूज, हाइजीन मेंटेन करना है, थ्रोट हाइजीन मेंटेन करना है, इफ देयर इज कफ एंड कोल्ड डोंट इग्नोर इट। एक बार 2 बार हो गया तो एक पैरासिटामोल खा लिया ठीक है, बट बार बार होगा यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। डाउटफुल हुआ तो पेनिसिलिन इंजेक्शन लेना है। सो इफ समबडी गेट्स रिपीटेड cough, then pain in the throat, गांठ का दर्द, जॉइंट पेन, ये सब होने से यू मस्ट सस्पेक्ट एंड गो टू डॉक्टर। ट्रीटमेंट इज सिंपल, उस समय ये सारा हाइजीन मेंटेन करना है, थोड़ा पेनिसिलिन देना है, दैट क्योर्स। इफ यू डोंट डू दैट, इफ इट हैपन्स रिपीटेडली, फाइनली इट इज गोइंग टू एंड इन रियूमेटिक डिजीज एंड रियूमेटिक हार्ट वाल्व डैमेज। तीसरा जो सबसे बड़ा कार्डियक प्रॉब्लम है भैया, लोग को क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जिंदगी में आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या डिसिप्लिन? खाने का डिसिप्लिन। इफ यू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट विल गिव टेस्ट टू योर टेस्ट बड्स, बट यू विल किल योरसेल्फ। दैट डिस्टर्ब्स योर कोलेस्ट्रॉल mechanism in the body, and cholesterol is deposited in the arterial wall, उसमें लीवर नैरो हो जाता है। सो कॉर्नरी आर्टरी का वॉल में यदि कोलेस्ट्रॉल बैठ गया तो कॉर्नरी आर्टरी नैरो हो जाता है, एंड लेस ब्लड इज गोइंग टू हार्ट ड्यूरिंग वर्क, सो लेस ऑक्सीजन। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग सम हार्ड वर्क और रनिंग, यू गेट चेस्ट पेन, दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया, एंजाइना। वो ज़्यादा होगा तो हार्ट में अटैक आ जाएगा, मीन्स blood will not go into heart muscle and it will undergo necrosis, that is heart attack. ये सारा प्रिवेंट करने का उपाय है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट पर्सनल हैबिट्स। तो क्या क्या हैबिट है? खाने पीने में परहेज है, यू टेक नॉर्मल डाइट, नेचुरल फूड। ऐसा नहीं कि पॉकेट में पैसा है तो रोज 5 स्टार में खाओ। सो वक्त नहीं, हम तो बहुत बिजी है, चलो रोज हम फास्ट फूड खाते हैं, वो सब नहीं करना है। तो हम टू क्रिएट पब्लिक, एक बात हम जरूर बोलते थे। एक बार कोई सोशल कैंप में थे, गांव में थी, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और लेडीज, रूरल लेडीज। उसने पूछा कि कैसे ये हार्ट अटैक प्रिवेंट हो सकता है। इन विलेजेस लॉट ऑफ विडोज आर देयर, ड्यू टू व्हाटएवर रीजन हस्बैंड डाइड अर्ली, दे आर ऑल हार्ड लेबरर्स। हार्ट अटैक हो गया, मर गया, कहाँ फैसिलिटी है? सडनली आई सॉ दैट लॉट ऑफ बकरी चल रहा था चारों तरफ। मतलब आपको तो हार्ट अटैक नहीं होगा, आप यदि बकरी के जैसे हो जाओगे। तो उसने पूछा बकरी मतलब क्या करना है? तो वो जो खाना खाता है वो खाओ। तो आपको मैं घास फूस खाने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अकीन टू दैट नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल फ्रूट्स, ये सब खाओ। तो गरीब आदमी रहोगे तो मेरे जैसे गरीब रहोगे, आपको बीमारी नहीं होगा, क्योंकि आप डेली चिकन खाओगे, मटन खाओगे, ये सब ठीक नहीं है। खाओ, कभी कभी खाओ जरूर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड टेक नेचुरल एंड सिंपल फूड, प्योर वेजिटेबल, प्योर फ्रूट्स, ये खाओगे। दूसरा है, यू हैव टू वॉक एंड वर्क, चलना फिरना है। नॉर्मल लोग को काम करना पड़ता है, तो आपके पास काफ़ी साधन है, तो हमेशा गाड़ी लेके चलो भाई, दिस इज नॉट राइट। चलना फिरना करो। तो एक टर्म आ गया है, उसको हम बोलते हैं वर्क प्लेस वेलनेस। एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ, यू मे नॉट गेट इनफ टाइम टू वर्क। मॉर्निंग में वर्क करना है, लोग घर में काम करना है, बच्चे हैं घर में या बुजुर्ग हैं, घर साफ करना है, फिर डिपार्टमेंट रहना है, यू डोंट हैव टाइम। फॉरगेट अबाउट दिस, टाइम नहीं मिलेगा तो जिंदगी बीत जाएगा ढूंढते ढूंढते, तो दैट विल बी डिफिकल्ट इशू। सो उसमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज इन योर वर्किंग प्लेस, दैट गोज बाय द टर्म वर्क प्लेस वेलनेस। उसमें हम क्या करते हैं, मतलब ये आपका बड़ा कैंपस है, यू वर्क इन वन डिपार्टमेंट, तो दूसरा डिपार्टमेंट तो लेना ना पड़ता है। एक कोई काम है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना के भेज दिए अटेंडेंस से, वो मत करो, खुद जाओ लेकिन। सो इफ यू विजिट डिफरेंट डिपार्टमेंट, इफ यू वर्क इन द डिपार्टमेंट,
फॉर योर रेगुलर वर्क, ये जब आपका हैबिट बन गया, ऑटोमेटिक देखोगे दिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी वॉकिंग फॉर 5 किलोमीटर्स. इन हॉस्पिटल व्हाट यू डू, मोस्ट ऑफ द मेजर हॉस्पिटल्स आर मल्टी स्टोरीड. मान लो 10 महल का बिल्डिंग है, तो मॉर्निंग में पहुंच गए, एक फ्लोर चले गए, वहाँ दिस एंड टू दैट एंड पूरा पेशेंट का राउंड लगा ली, फिर दूसरा फ्लोर गए, उसका राउंड लगाए. इस तरह से unknowingly or without having much toil you walked and climbed. And फिर all the patients are there, they have come for your visit. आप कुछ भी नहीं करोगे, पेशेंट के पास पहुंच गया, बेटा कैसा हो, बेटी अच्छी होना, ये बोलोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे. ये करने के लिए को जाना पड़ेगा. If we move couple of times to the patient just to say hello, and while climbing up, go floor by floor, and then climb down. Automatically in workplace, you maybe climb for couple of floors and you walk for 5-10 kilometers. तो ये तो हॉस्पिटल का बताया. आपका यहाँ तो बड़ा कैंपस है. ये डिपार्टमेंट हमेशा जाओ. डोंट सेंड फाइल्स, डोंट मेक ईमेल्स, एंड इवन इफ यू सेंड ईमेल्स, सपोर्टिंग के लिए आप जाओ, बात करो लोग से. सो वर्क प्लेस वेलनेस इज मेजर इंस्ट्रूमेंट for working and exercise. What would you suggest for the people like during lockdown? Almost every work is work from home. So for those people, work from home, but not out from home. किसने आपको बताया कि घर के बाहर मत जाओ, पब्लिक प्लेस में मत जाओ, मार्केट में मत जाओ, पब्लिक प्लेस में मत जाओ, बट वर्क फ्रॉम होम यहाँ बैठ कर वर्क फ्रॉम होम करो. घर में कैंपस करते हो, मान लो यू आर नॉट दैट फॉर्चुनेट, उतना बड़ा घर आपके पास नहीं. अरे छोटा मोटा 2 कमरा तो है ना, उसी में चक्कर मारो, घर के आसपास से चलो. फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है. सो फूड मस्ट बी नेचुरल फूड, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड वेजिटेरियन फूड इज क्वाइट गुड फॉर हेल्थ, बट फिश इज वेरी गुड. यू कैन टेक फिश. बियॉन्ड फिश एवरीथिंग you must take it, but not very frequently. And more so, whatever food you take, either vegetarian or non-veg, food should be ordinary cooking in your house. काफी डीप फ्राई किया, काफी मसाला डाल दिया, so उसमें you are scientist to know better. In a protein, if you cook, the protein का denaturation होता है. Lot of जो unsaturated fat है, saturated fat होता है. मुझे तो इससे ज़्यादा पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा जानता है. एक आध वर्ड, you know the science. If it is saturated fat, that is more dangerous. So पहले जो वनस्पति मिलता था वो तो खत्म हो गया. So the oils are different. If you do deep fry and lot of cooking, that spoils the food. So regarding food, it should be natural fruits, natural vegetables, and easily cooked food. What you take every day. Some meal products, maybe you can take some doodh, dahi, milk, and curd. So simple food, some work and exercise, and avoid bad food, dirty food. Don't take lot of sweet, don't take lot of sugar, don't take deep fry. So these are don'ts. Beyond that, there are a couple of things, those are also under control. Diabetes, blood pressure. So diabetes को बोलेगा नहीं कि हम diabetes हैं, चलो आप careful हो जाओ. Diabetes usually express themselves with complications. Diabetes may remain unrecognized for a long time. कभी कहीं इंजरी हो गया, घाव नहीं सूखा, तब पता चला डायबिटीज है. सडनली सम हेल्थ कैंप में चेक किया तो शुगर 400 आ गया. सो फॉर दैट आवर सजेशन इज यू मस्ट डू पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप्स. जैसे शुगर देखना है, दूसरा ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड प्रेशर बेसिक रूटीन, उसमें रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक करना है. और हम क्या बताते हैं, जो people who are beyond 40 or who has got some family history, they must check their blood pressure daily. हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट आते हैं ना, हम उसका प्रेशर नहीं देखते हैं हॉस्पिटल में. बताते एक ब्लड प्रेशर मशीन लेके जाओ, डेली देखो, चार्ट लेके आओ. दैट गिव्स यू आइडिया. तो चेकिंग योर ब्लड प्रेशर, कीपिंग इट अंडर कंट्रोल, checking sugar frequently, keeping in control. So diabetes and blood pressure both are controllable. Then comes smoking. Smoking tobacco is dangerous for health. It causes heart attack, it damages the lung, it causes vascular damage and leg where ulcer हो जाता है, it causes kidney damage. So smoking, pollution तो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोशिश करना है. So avoid smoking, treat diabetes, treat hypertension. And diabetes, hypertension ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है.
if you are careful about walking, exercise, avoid obesity, food में आपका, if you are disciplined, you can control your diabetes or hypertension without medicine. आप डायबिटीज का कंट्रोल कर लिया, हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लिया, खाने पीने में जो डिसिप्लिन, आई डोंट यूज द टर्म रेस्ट्रिक्शन, दैट्स अ डर्टी टर्म, इट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन आपको डेली, हम बंगाली है, डेली रसगुल्ला तो नहीं खाना है, इस टेस्टफुल एक दो खा लो. सो आपको मछली पसंद है तो एवरी ड्राई फ्राई या फिश फ्राई बना के रोज खाओ, दैट इज डेंजरस. So whether you are veg or non-veg, whatever you take, that should be under discipline. So discipline in food, discipline in life, exercise, then avoid diabetes or treat diabetes, treat hypertension, don't smoke, avoid your fat, pot belly. Earlier, बंगाली में क्या होता था, दामाद जो बनेगा ना उसका पेट बड़ा होना चाहिए. So there are a lot of writings by writers. So that's what suggestive of health. वैसा हेल्थ नहीं चाहिए. So नॉर्मली फिल्म स्टार नहीं बनना है, उतना थिन नहीं बनना है. टेक रेगुलर फूड, but you should avoid central obesity. If you are careful about this couple of issues, and they should start quite early in life, एकदम जिंदगी में पहले करो. ये if you do it, if you practice this will cut down your heart problems to a great extent. अब दूसरा है कि कभी प्रॉब्लम ये सब कर रही हो, फिर भी slightest doubt, somebody having repeated sore throat and joint pain, yes, you must check with doctor and treat. थोड़ा सा चलने से चेस्ट में डिकम्प्रेशन, दर्द होने लगता है, डोंट नेग्लेक्ट, गो टू डॉक्टर. ऐसा नहीं कि हार्ट डिजीज और हार्ट का डिजीज का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट लाइक दैट. अर्ली डिटेक्शन होने से सारा कॉस्ट भी कम जाएगा. क्या क्या करना है, जनरल एग्जामिनेशन, एक ईसीजी करना है, एक चेस्ट से करना है, इको करना है. दे आर नॉट एक्सपेंसिव एंड मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मेनी चैरिटेबल सेंटर दे आर फ्री ऑल्सो. सो इफ यू आर केयरफुल एट दिस स्टेज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट इज नॉट एक्सपेंसिव. आप उसको समझा नहीं, बढ़ने दिया, it ended in heart valve damage in rheumatic, then you have to go for valve replacement and cost several lakhs. Heart attack हो गया, you have to go for stenting and CABG, that is expensive. So if you are careful about prevention, if you detect early, if you treat early, it is neither expensive nor you are going to lose your life. वो पैसा भी बच जाएगा, जान भी बच जाएगा. So it requires fundamental health education, basic ideas. तो आज के दिन में तो गूगल गुरु है ना, तब खोल के सब कुछ पता चल जाएगा. क्या खाना है वही पता चलेगा, क्या करना है वही पता चलेगा, कौन नहीं करना वही पता चलेगा. Sometimes it's dangerous also, sir. Most of the time it's dangerous. it will lead to you have cancer. You have cancer. हाँ, ये तो पता ही नहीं. Lot of misinformations are also there. So what you asked, answer is very simple. It needs education, health education. And health education करने वाला कौन है? There is no school की going to teach health education. Standard education का तो स्कूल है, health education कहाँ होगा? Who is teacher? All of us are teachers. It is not the job of doctors only. Doctor खुद कर नहीं पाएगा. It is everybody's job. Yes. घर में mother or elder sister, it is their job. Office में it is your job, office colleagues. So anybody and everybody is the educator for health education. First, let us give very basic thing, hand washing. पहले आपको याद होगा, अब तो ये बच्ची हो, तो हमारे ज़माने में छोटे बच्चे खेलने जाते थे शाम को, उसमें खेलना जरूरी था. पढ़ाई तो थोड़ा होता था, ज़्यादा खेल होता था. तो घर में बच्चे आ गए तो अच्छी तरह हाथ पाँव धो तब बिस्तर में आ जाओ. अब तो कॉन्सेप्ट ही चला गया. करंट सिविलाइजेशन में एक कम का रूम है, यूनिट फैमिली है, वो खाना पीना सब बैठ के रूम में हो रहा है. सो दैट टेक्स अवे हेल्थ हाइजीन. तो अर्ली लाइफ में पहले होता था, अभी भी रूरल सेटिंग में होता है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे वॉश योर हैंड्स एंड फूड वेरी नाइसली. तो उसमें उनके पास न सैनिटाइजर है न अच्छा साबुन है, जो भी मिलता है. इफ यू सिंपली वॉश योर हैंड विथ वाटर, फ्लोइंग वाटर, उसमें मोर देन हाफ जर्म चला जाता है. If you wash your hand with ordinary soap, so light by sunlight, any soap you have, that takes away more than 90% of your germ. So ऐसा नहीं कि कोरोना जब हुआ तभी हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस रहेगा, तो पहले भी था, 1000 years था, बट पीपल हैव फॉरगॉटन इट. ठीक है, लेकिन कुछ भी रहो उसको डेली साफ करो, डेली चेंज करो.
So keeping yourself clean, maintaining personal hygiene, and taking all the positive steps for maintaining health, washing etc. ये सब करने से ये कोई भी infective disease कम होगा. Earlier it was infective disease. Now we have come to lifestyle disease. Infection control हमने कर लिया by inventing antibiotics, anti-tubercular, anti-diabetic. तो but अभी जो lifestyle disease आया है, they are still more dangerous. It is almost 70% deaths are due to lifestyle disease. Yes. And diabetes, hypertension, these are dreaded disease. They can affect any system. इसलिए treating diabetic and hypertension and result as a cancer, these lifestyle diseases are dangerous. They have to be treated. और अभी क्या है कि you are getting bad side of both. Infective disease चला तो गया most of the, जो बचा है that is multi drug resistant infection. Yes. TB है तो दवाई से काम नहीं होता है. Infection हो गया तो ordinary antibiotics don't work. So drug resistant tuberculosis, multi drug resistant infection. So drug resistance आ गया, so conventional medicines or antibiotics are not working. And lifestyle disease में it is not detected early, it ends in heart attack, brain stroke, kidney damage. So all these problems are coupled together. Now we are passing through phase when we are facing both disease, both type of disease equally, infective as well as lifestyle. So सबके लिए most important is education. Education, that is the last word. And education किसको देना है? Everybody is teacher, not only doctors. Unless it comes from society. Yes. आप बहुत पढ़ी लिखी हो वो भी ठीक है, नहीं हो वो भी ठीक है. Mother is the best teacher, as you said every time. So ये सब काम सबको करना है. So these are the issues. If you are careful, you can prevent disease, and you can detect this early, and you can make arrangement for treatment also very low cost. If it's early, थोड़ा पैसा में हो जाएगा. So if you neglect or if you are unable to take adequate precaution, it takes long time and then you are sued. So I think you have answered our next two questions. So let me ask one more. So you were, could you share any unique case that was the most challenging one that you ever handled? इसीलिए तो महाभारत खिलाना पड़ेगा. तो 40-45 साल का मेडिकल प्रैक्टिस हो गया ना. बट डेफिनेटली आई कैन रिमेम्बर rather case से ज़्यादा important. Let me tell you a couple of stories. Very One of the story actually we heard from our director sir कि somebody got shot. You were about to enter. That is. Yes, but we would like to hear that. Okay, that's good. That I can remember maybe around 10 years back in a private hospital. I was there. I was ready. सब करके I was ready to operate in one patient. Suddenly, instruments are ready, anesthetists are ready, myself was ready. Suddenly, hospital staffs walked in rushed with a boy, young boy. He is the staff of that hospital. Okay. Straight to OT table, जाके डाल दिया, उसको गोली मार दिया कहीं. Maybe 2 minutes back. The next to that hospital is the railway line yard. वहाँ गोली मार दिया. तो लोग देख लिया कि यही क्या काम करने का बंदा है. उसको उठा के लाया, उसने बैठाया. Everything ready. So it was pulseless. डेड बॉडी मुर्दा लग रहा था. So immediately opened, immediately 1 मिनट में चेस्ट के अंदर गया तो हार्ट भी बंद है. तो पंप किया, पानी वगैरह डाला, देखे gradually revived. Then गोली हार्ट की इधर से उधर हो गया. So it was a challenging surgery. That was repaired, everything was done, and finally he survived, and he's still in work. So it was sheer luck. And if you translate otherwise, whenever emergency happens, the arrangement should be like that. An emergency should be handled immediately. So gunshot injury, stab injury, if you take care immediately, it works. In heart attack, earlier heart attack was treated with medicines, long suffering, couple of days. Abhi heart attack आने से तुरंत they are taken to cath lab, angio is done, immediate angioplasty, then patient recover fully, the muscle damage doesn't happen. So this is called golden hour. Yeah. Patient should come within 2 hours, maximum 6 hours.
But what I was taking that boy, that was the unique experience. Let me tell you one interesting story. One day I was waiting close to my medical college, RGR medical college, I was working there. So my driver was on leave. So I thought, let me take metro. So my students in medical college में क्या होता है कि बहुत सारा चला रहता है ना. So next. Always. And medical training में अभी भी गुरुकुल का system है. You have to sit with guru, you have to only then learn. So ये culture अभी भी है. So my boss took me to metro. I was not very accustomed. बहुत दिन से जाना ना habit नहीं था. So when I entered, a train had just gone. Like after 7-8 minutes, next train will come. सुनसान station था. Suddenly I was standing there. So मेरे बच्चे जो आए थे साथ में, बेटा तुम चला जाओ, अभी तो ट्रेन आएगा, हम बैठ जाएंगे इसमें. So one middle-aged lady came. She must be around 40-45. So came close to me. In Bengali, she asked, "আমাকে চিনতে পারছেন? Can you place me? Can you identify me? आप मुझे पहचान रहे?" मैं देखता रह गया. So what to say? हाँ ऐसा तो लग रहा है. ये नाम में याद नहीं पड़ता, जैसे मैनेज करते हैं. So she asked me 3-4 times. Finally she got very upset. नहीं आप हमको नहीं पहचान रहे हो. मैं सॉरी मैडम, हाँ पहचान तो जैसे मैनेज किया उसको. Suddenly one girl, just like modern girls, very thin, looks like a straight line, having a tight pant, etc. And she was getting irritated with mother's behavior. Mother is standing with a man and all talking nonsense. So suddenly mother went and dragged her. Okay. यारे पाँव लगो, गोड़ लगो. And she was very upset. क्यों? उसको एक थप्पड़ मार दिया हमारे पैच पर. Then she started to ask me, can you identify her? Okay. मैं तो हैरान हो गया. So when I could not identify, she was in tears and she told, "You can't remember me? You operated her and you saved her life." तो मैं से हाँ कब किया? अरे when she was 1 month baby. How can you identify her now? अरे 1 महीना का बेबी उसने ऑपरेट किया. Now she is maybe 16 or 18 कुछ होगा. तो 1 महीना बेबी 18 में कैसे पहचानेंगे? So this was very interesting story. They had image of that time. She identified me. Yes. But for me it is difficult to remember. Yes. And she expected this sort of recognition from them. तो उसके दिल में कितना गहरा इमेज है कि दिस इज व्हाट इज सोशल रिटर्न. और एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ तो बहुत मजा आ जाएगा. Sure. लॉट ऑफ माय पेशेंट्स रिलेटिव्स फादर पेरेंट्स दे कम टू मी एंड फिक्स अप देयर डॉटर्स मैरिज आफ्टर टॉकिंग टू मी. क्योंकि उनके बेटी के शादी में जाना है. ऐसा बहुत सारा इंसिडेंस होता है. अभी ये रिलेशन बहुत कम हुआ है. बट ड्यूरिंग आवर टाइम एंड the period we have seen, ये relation बहुत पक्का होता था. One day one gentleman came, तो सर आपके हमारे यहाँ जाना है, बेटी की शादी है. नहीं ठीक है जाएंगे. अरे जो लोग आते हैं ठीक है जाएंगे, सब तो जा नहीं पाते हैं. तो 3 बार 4 बार मैं सोचा बोला निकल जाएगा ठीक है. तो कोई ज़्यादा आएंगे तो उसको गिफ्ट दे दिया, आपका बेटी को दे देना हम आ जाएंगे. तो आगे बहुत परेशान हो गया बेचारा, आके आउटडोर बैठ गया कि आपका आउटडोर खत्म हो गया, हम आपसे अच्छे से बात करके तब जाएंगे. किसी को मानता नहीं था, न सिक्योरिटी न दरवाना के हमको मिलना है. बैठ गया. सो आउटडोर 200-250 पेशेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वो खत्म हो गया तो मेरे बोला मैंने 4 बार अपना बेटी का शादी कैंसिल किया, आपको इस बार जाना ही होगा. ना कोशिश तो करने के अंदर रिमोट प्लेस सुंदरबन, मेरी क्वाइट फार अवे फ्रॉम कलकत्ता, रिमोट प्लेस. तो नहीं आप नहीं जाओगे तो बेटी का शादी हम नहीं करेंगे. तो हैरान हो गए. तो ठीक है जाना ही है. सो देन डिसाइडेड एंड आई प्लान कहीं जाना ही है. तो एक बार गए तो बोला कि हाँ हम आइए आपका साथ में हम आएंगे, आपको ले जाएंगे. दैट इज़ फेयर ना, आपके गांव में ढूंढते रह जाएंगे मिलेगा नहीं. तो एक दिन आ गया मॉर्निंग में, हम पहुँचे, इसके साथ गए. मेन रोड ख़त्म हुआ, फिर लोकल रोड उसमें ख़त्म हो गया. तो उसे पैदल में 2-3 किलोमीटर तो जाके पहुँचे. सो विलेज रूरल हार्ट, सो मट्टी का जो घर होता है ना उसमें. सो देन उसके अंदर घुसे तो सर नीचा कर घुसने लगा. आई एम क्वाइट टॉल मैन. सो
आइडेंटिटी पेशेंट का बाद में डिस्कस करने को उसमें मजा आ जाएगा, तो पहले मजा नहीं आएगा। तो फाइनली जो शादी के मंडप जहाँ होगा, इट इज रूरल, दैट मड बिल्ड हाउस, डाउन होके और अंदर चले गए, तो रिमोट प्लेस में पहुँच गए। तो सडनली मुझे एक रूम में ले गया नैरो जगह में, तो जैसे चारों तरफ छोटा सा घर है, अंदर में क्लोज एरिया, तो वो जाके घुस गया ना। सडनली लॉट ऑफ लेडीज वर सिटिंग, घूंघट लगाए हुए। तो वो जो लोग, उसके जो पेरेंट्स फादर जो हमको ले गए, तो लेडीज वर नॉट इन्फॉर्म्ड। वहाँ ना फोन का साधन था, ना जाने का छोटा नैरो। और सडनली देखा एकदम शी शाउटेड वेरी स्ट्रांगली, अरे ये तो शादी की जगह है, मर्द को ले आया। शी शाउटेड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन, मर्द को ले आया। इट वाज मोमेंटरी रिएक्शन, आई वाज स्टन्ड। वो बोला अरे मर्द नहीं है, डॉक्टर है। So this is real story, and that is very conservative Muslim family. उन्होंने तो जिंदगी में किसी मर्द को तो जाना ही नहीं देखा। They are separate. हाँ, those ladies, elderly ladies, जो बैठे थे, उसने शायद सूरज का रोशनी कभी नहीं देखा। That's so conservative. तो उसका जो मेल में घर जाते हैं, they are so obligated. उससे बात भी हुआ होगा घर में कि डॉक्टर को लाएंगे। So it was definitely in their heart कि डॉक्टर आएगा। लेकिन उस समय by traditional culture they shouted किसको ले आया। So when you are doctor, when you are treating somebody, there is no gender. You are not male, you are not female, but you are a human being, you are a square. रिएक्शन के बाद तो सारा लोग तो शर्मिंदा हो गए। Then it was fantastic reception, and वो शादी बाड़ी में I had to stay for 3-4 hours, उसका पूरा काम हो गया, and I was the only male member there. So because you are a doctor, and doctors are next to God actually. Yes. वो तो यही बात। So अच्छा लगा होगा इस स्टोरी। This is nice. Let me tell you another story. Yes. That was relating to some doctor. So he was practicing in a very remote rural area. So he wanted me to go to his house sometimes. He worked under me sometimes. तो somehow वो जो कैंप करते थे, एक बार वहीं की कैंप था, तो एक दिन उसके घर पहुंच गए, वो आया। लेकिन तो इट वॉज बिग, रईस जमींदार जैसा आउट हाउस, फिर अंदर गए उसमें इन हाउस, सो वेरी रिच मैन। His father was a doctor, so he had a huge practice in rural areas. सो घर गए, तो अंदर से घुस गए ना, बैठने की जगह है, एक पार करके दूसरा में अंदर में बैठने की जगह है इन हाउस। तो आई एंटर्ड थ्रू दिस डोर, एंड देन घूम के इधर ही पीछे तक बैठना है, लुकिंग एट फ्रंट। जब हम अंदर घुसे, वो हमारा जो स्टूडेंट डॉक्टर था, उसका मम्मी उस समय आ गई। आई जस्ट ऐसे मेरे बेटा घर बैठे बैठकर चौंक गए। तो मम्मी आई तो बोला, एल्डर थी, बेटा बुरा मत मानो, हमारा लड़का पागल है। यू नो व्हाट इज देयर, हम बैठे ना, देयर इज पिक्चर इन द वॉल, उसमें फूल का माला पहना हुआ है, चंदन लगा हुआ है, और साथ में भगवान खिलाने का छोटा सा थाली रहता है, उसमें कुछ स्वीट दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, दैट इज माय पिक्चर। इफ हिज सन, दैट इज माय स्टूडेंट, सो वो मॉर्निंग में आके पूजा करके निकलता है, तो उसका दिन अच्छा जाता है। तो उसने मम्मी बोली कि मैं उसको बोलता रहा, बेटा ऐसा नहीं करो, तो किसका सुनता है, उसको करने until he maintains this. And after that I am still alive. Wow, that's so these are very interesting part, and his love and respect came while working with me. बहुत दिन से काम किया, देखा, and he is a very very sensible and decent practitioner. So in clinical life you gather a lot of experiences, and more so जैसे एज बढ़ता जाता है, इफ़ यू डू कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, सोशल रिलेशन जी बढ़ता है और बढ़िया होता है। सो वन इशू आई टॉक एवरी टाइम, दैट व्हाट सोसाइटी हैज गिवन अस, वी हैव टू गिव बैक समथिंग। हम तो देते नहीं, वी आर ऑल प्रिविलेज्ड एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, वी आर ऑल प्रिविलेज्ड। तो हमने जो पढ़ाई किया गवर्नमेंट कॉलेज में, इसमें ये तो ऑलमोस्ट फ्री, प्राइवेट में थोड़ा बहुत पैसा लगता है। IIT, एम्स, ऑल मेडिकल कॉलेजेस, ये तो दिस इज रन बाय पब्लिक फंड। इसके बाद हम कभी विदेश चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ यू स्टे देयर,
हम प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना शान शौकत सब कर लेते हैं, लेकिन it has been given by the fundamental growth of the society. Society पैसा दिया, उसी के पैसे से कॉलेज बनता है, लैब बनता है, इंस्टीट्यूट बनता है, we work there. So when we earn means in terms of name, fame, money, everything, we feel that is ours. बनाया, इन्वेस्ट बहुत लोगों ने किया, लेकिन it is feeling that is my property, not ours, my property. So I have got serious about that. कि after you become expert in any field, maybe medicine, maybe science, maybe anything, so you work, you earn, but don't forget that this has been given by society, something to be given back to society. If he is a doctor, ऐसा नहीं, I don't say that आप free treatment करो सबका, but you should keep something in mind. गरीबों का इलाज करो, कॉमन मैन का इलाज करो, पैसा कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देयर आर पीपल हु नीड योर सर्विस, नीडी पीपल, यस, उसके लिए काम करना है, तो फिर रिमोट एरिया में जाके काम करना है. यू आर डूइंग अ स्पेशलिटी जॉब, बट यू शुड गो टू रूरल प्लेसेस, हेल्प देम. सो दिस आर द इश्यूज, दिस इज रेस्पॉन्सिबल एवरीबडी कि व्हेनेवर वी आर एस्टेब्लिश्ड, वी हैव कंप्लीटेड एजुकेशन, we have to be careful to give something back to the society. हमेशा पैसा देना ऐसा नहीं, कभी कोई टाइम स्पेंड करो. जैसे आई हैव सीन कपल ऑफ माई साइंटिस्ट फ्रेंड who still go to the rural places, teach science to the students, प्रोजेक्ट वगैरह करना है. आपका डिरेक्टर भी ऐसे करते हैं, that I heard. So I know couple of my scientist friend, they still connection with the rural place. तो बच्चों को स्कूल में पहुंच गए, साइंस का प्रोजेक्ट, बेसिक एजुकेशन, basic motivation. So whatever way we can do, we must do it. Giving something back to the society, or giving back is not mercy. आप समझ लोगे कि हम mercy करने दया करते हैं, is not right. It should come from your heart, this passion that this society has given me a lot of things. Let me have the privilege to serve. That is the motivation. जैसे आप इंस्टीट्यूट में काम कर रही हो, had you been in industry, it would be a different life. And I have a strong feeling you would have earned much more. So spending in institutes, you may get less, but this is also giving back to society. Yes. You are taking part in teaching, training, you are guiding students. That is one of the society. To give back society means not only money, in terms of education, in terms of training, in terms of awareness. अब जब कोरोना हो रहा है, 10 आदमी बोलो भैया मास्क पहनो, 2-4 मास्क बांट दिया. तो एल्डरली पॉपुलेशन है, ब्लड का मशीन खरीद के दे दिया, ये खरीद दिया, 1,500 का दाम है, चलो सोसाइटी के बहुत लोग को फायदा हो जाएगा. सो टू गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी व्हेन यू हैव दिस सम लेवल. सो ऑल दिस क्वेश्चंस का एक फंडामेंटल इशू है कि सोसाइटी मस्ट बी एजुकेटेड. एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन. एजुकेशन डजंट हैव एनी लिमिटेशन. इट शुड बी एडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर इलिटरेट. दे मे नॉट बी एबल टू राइट, बट दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू से. सो एजुकेशन इज फंडामेंटल इशू. If people are educated, especially for health related issues, they can protect themselves. Number of diseases will come down. There will be early detection, early diagnosis, and treatment will be much easier. Yes. So these are the couple of issues by which you can keep yourself healthy, you can keep your society healthy, and you can dream to see a bright Indian future. Your country will be saved from all calamities. That's true. हो गया सारा क्वेश्चन? I think, sir, you have covered almost everything. Yes. So should we ask this question? Yes. So, sir, lastly, any message to CDRI scientific community? Oh, this is very difficult question. Till now I have been handling common people. Now CDRI scientific community, yes, I have got message that one issue being a science institute, so you must practice discipline life. Scientists are working round the clock. Yes. They must work. Yes. But they must be careful about their personal health. What are the issues? So sometimes you are compelled to work hours together.
during that period, you must find out time for working, food, and that message should be going to the next generation. Then whenever you get time, you spend some time with students, school students, and rural community. उनको message देना है. And you have to find out issues which are relevant to social benefit. That is translation research. That is very close to my heart. Whatever big work you are doing, difficult work you are doing in lab, that must be translated to people benefit. So that is translation. Research work must be translated, the word that is bench to bedside. That is fundamental thing. Yes. एक mask आपने बना लिया. So in the beginning of Corona, there are very huge dearth of mask. Mask नहीं मिलता था. अभी तो self sufficient है. Hand sanitizer. ये expensive, क्या जरूरत है? वो तो प्रोपाइल अल्कोहल की ब्यूटाइल के कौन अल्कोहल देते हैं? प्रोपाइल अल्कोहल. So 70% अल्कोहल. तो एक बॉटल का कीमत आता है 30-40 रुपीज. बाजार में 100 से बिकता है 200 रुपीज. So message for the scientist: keep yourself healthy. Beyond work, you discipline your life to keep yourself disease free and transmit this culture to your next generation. जैसे मैंने बताया कि workplace wellness. Transmit this culture not to sit and work only. They must move from this table to that table, make some social relation. In between, cultural program, games, sports, visit local rural area, teach students. Then as a scientist, if you say something to a school, local school, जब visit किया, खाने का ये आदत है, career counseling, पढ़ने का ये, if you say it comes from your mouth, it will have huge impact. So scientists have to discipline yourself. They have to keep themselves healthy. They have to help others, youngsters, to follow their footprints. They have to take part in social activities, social games, school program, health checkup program. ये सब करना है. एंड साइंटिस्ट हैव टू बी वेरी विजिलेंट. एप्पल गिरा तो देखा एक साइंटिस्ट, इससे बहुत सारा चीज आसान होता ही रहता है. सो यू मस्ट बी विजिलेंट एंड ऑलवेज विद द इंटेंशन टू कन्वर्ट, ट्रांसलेशन इज नीड ऑफ द डे. रिपर्सनल ड्रग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नया मॉलिक्यूल बनाने में जिंदगी बीत जाएगा. तो आयुर्वेदिक कोई दवा है, जड़ी बूटी देखे यू डोंट नो, यू फाइंड आउट द extract what is main molecule and they work on this so that it is stamped. It may be simple. Off patent drug जो है, if you make some formulation and that will be easily available. So use of generic drug, that is also very important. Scientist, if you take a branded drug, amoxicillin, I mean it's a simple drug, you have then branded drug that costs much. So generic drug, that is important. छोटा मोटा हेल्थ रिलेटेड इशू, वैक्सीन लगाना है सबको, बच्चे को इम्यूनाइजेशन. सो दिस आर दी एडल्ट एजुकेशन, देन वुमेन एजुकेशन, स्कूल ड्रॉपर्स कम करना है, लॉट ऑफ सोशल थिंग दैट कैन बी डन बाय एनीबॉडी ऑफ सोसाइटी. एंड साइंटिस्ट बीइंग प्रिविलेज क्लास, एजुकेटेड क्लास. अभी भी सोसाइटी में बहुत लोग को इज्जत मिलता है. डॉक्टर को मिलता है बहुत ज़्यादा, साइंटिस्ट को मिलता है, टीचर को मिलता है. So since you are getting the respect of society, you should go close to society to tell them what to do. So in this respect, scientists, teachers, doctors, they are in the same bracket. They have to try to uplift the society. That you have to do. And ये सब करने के लिए खुद को हेल्दी करना है. 3 बार काम किया, फास्ट फूड खाया, घर जाके सो गया, ऐसा मत करो. रात को 2 बजे तक काम किया, फिर सवेरे 10 बजे 12 बजे तक सोया. Don't do this. So you have to regulate yourself, you have to do discipline, you have to transfer discipline to the next generation, and you have to work for the society, always with the idea of translation. That is what makes us a scientist.